Wonderful. Wonderful. So great. It's Thanksgiving Day in the US today. I don't know how many of you guys have heard about Thanksgiving. तो ये Thanksgiving का जो एक प्रथा है, it started many years ago, and the last Thursday in November is always Thanksgiving. Is it the last or second last? Next Thursday is already December or no? Yeah, next Thursday will already be December. Yeah. So the last Thursday in November is always Thanksgiving. तो ऐसा हुआ था कि जो पहले पहले यूरोप से जो मूव हुए थे लोग, अमेरिका की जो भूमि है वहाँ पर, तो उन्हें वहाँ के क्लाइमेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, वहाँ क्या मिलता है ज़्यादा पता नहीं था, क्या वहाँ ठीक से धान होता है वो भी पता नहीं था, कितनी कितनी ठंड पड़ती है वो भी पता नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं थे बिल्कुल उस पहले साल के लिए। तो तो जो वो पहले पहले जो लोग थे वहाँ के, तो वहाँ जो नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिकन इंडियंस जो कहते हैं, नेटिव अमेरिकन्स एक्चुअली, तो नेटिव अमेरिकन्स जो वहीं के रहने वाले थे जो लोग, द नेटिव अमेरिकन्स helped them to survive, taught them to grow corn and things that grow in America on American soil, and the seeds are available locally. So they helped them to grow the corn and to survive, and they gave them all kinds uh, of winter, and the how to survive the winter using firewood and warm clothes and all that. So तो शुरू शुरू में तो ये जो नए नए लोग जो आए थे, કેમ છો? हाँ करो भाई, या श्योर। तो शुरू शुरू में जो लोग आए थे तो वहाँ तो तभी तो बहुत दोस्ती थी लोगों में, नेटिव अमेरिकन और जो यूरोप से आए थे, पिलग्रिम्स कहते हैं उनको। तो यूरोप में जो प्रोटेस्टेंट जो वर्ग है क्रिश्चियनिटी में, उन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था उसको एस्केप करने के लिए वो भागकर यहाँ अमेरिका आए थे। तो इन्होंने पनाह दी उनको और संभाल के रखा, और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। तो जब विंटर ख़त्म हुआ तो कहा जाता है कि जो लोग वहाँ के थे, दे वर सो ग्रेटफुल that they invited all the Native Americans over, and they all had a feast together and dinner and all that, and gave thanks to them for taking care of them so nicely. So that tradition has continued throughout the history since then, for the last, I guess, at least 200. I guess it's more like 300 or 400 years that this tradition has gone on. So even though, I believe in celebrating everything. I don't say this is an American holiday, this is an Indian holiday, this is a Hindu celebration, or whatever. All all days are wonderful, and all days are worth celebrating, and any excuse to celebrate, you can count me in. तो तो थैंक्स गिविंग पे जो फैमिलीज होते हैं आजकल, ऑल द फैमिली जहाँ भी होते हैं सारे मिलते हैं, और और एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं वगैरह। तो सो दे so today also my kids, and both my daughters and their kids and their cousins and all, they are all together today and celebrating. So we also can take a moment to just be thankful for what is, thankful for everything that is, thankful for the food, thankful for the light, thankful for all of it, for every breath, because every breath is precious. So with that, on that note, let us jump into some music.
Is the harmonium audible? स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वशिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सो कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जब बनारस गए थे तो उन्होंने देखा है किसी बुज़ुर्ग को जो संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट ये रचना की थी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 31 वर्सेस आई थिंक, जिसमें पहला वर्स ये है कि ये जो व्याकरण आप पढ़ रहे हो आपके लास्ट मोमेंट्स में ये कोई काम नहीं आने वाला है। तो मूड मथे यानी जो जो एक पागलपन है हमारा उसको हटाओ और जो डिवाइन है, कॉन्शियसनेस है, उसको याद करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम। इस धरती का रूप ना उजड़े, इस धरती का रूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, सबको मिले दाता सबको मिले सुख का वरदान, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो
अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। Swing low, sweet chariot, coming home, carry me home. Are you there? Is it audible? Am I audible? Yes? Okay. So this is one of the famous hymns or psalms or devotional song from the Christian tradition. And it says, swing low, sweet chariot. Sweet chariot, chariot yani rath, calling the chariot which is going to take you home. Swing low, sweet chariot, coming to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming to carry me home. Coming to carry me home, this chariot. We all want to go home. At the end of the day, home is all there is. Home is where we have come from, and home is all we want. And the home is always available. When you are in touch with who you are always at home. Because everywhere is home. Everywhere is only the mind of God. I looked over Jordan, and what did I see? Jordan is the name of a river in the Middle East. I looked over Jordan, and what did I see? Coming to carry me home, a band of angels coming after me, coming to carry me home. O sare जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने बलवानों को दाता, बलवानों को तू दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम,
ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवा अल्लाह तेरो नाम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मथे There's a plea, there's an urge. Don't waste your life. Don't waste your time after things that don't matter. Go for it all. Go for the ultimate. Go for the highest. Go for the deepest. Don't get caught up in the trappings by the wayside. गोविंदम भज मूढ़ मथे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मथे मांगो मांगो का सिंदूर ना छूटे मांगो का सिंदूर माँ बहनों की आस ना टूटे देह बिना दाता देह बिना भटके ना प्राण सबको सन्मति दे भगवान अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम Swing low, sweet chariot. Carry me home, coming to my carry me home. माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है मैं रोंदूंगी तो है
माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। So before that day comes, while we still have this life, while we still have this awareness, while we still have time, while we still have time, make the most of it. Bring that to this. Bring that to this. आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। दुर्बल को ना सताइए, जिसकी मोटी हाय। दुर्बल को ना How can we not take care of our elders? How can we not take care of our children? How can we not take care of plants? How can we not take care of the animals? How can we not take care of the fish? How can we not take care of the oceans? दुर्बल को ना सताइए, जिसकी मोटी हाय। बिना जीव की खाल से, बिना जीव की खाल से, लोहा भस्म हो जाए। बिना जीव की खाल से, without, what is this? Without awareness, without this life हो जाए।
It is only awareness that gives life, that gives reality, that gives solidity, that gives this dream called life a shape. It is only awareness. Without this awareness, लोहा भस्म हो जाए. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर. Simple words. सिंपल वर्ड्स, बट उसे थोड़ी बारीकी से देखिए, समझिए. एक तो वो कह रहे हैं कि बाजार में खड़ा है, ना घर में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में, बाजार में खड़ा है. हमें खैरियत कुछ लोगों की ही चाहिए. और कुछ लोगों की तो बिल्कुल नहीं चाहिए. सबकी मांगे खैर, सबकी मांगे खैर. What a high state of being do you have to be in to wish well for all. All. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर. ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर. माटी कहे कुम्हार से, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर. ये जब अवस्था है तब जाकर आपका प्रेम यूनिवर्सल होगा. Then your love will be deep. Then your love will be inclusive, not exclusive. I only love my friends. I only love my family. I only love my children. I bless my grandchildren. I bless, which goes, God bless America. And people like it and they put it on and it's okay. But do you think God would only bless America? God blesses all. ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, which means I bless everything. सबकी मांगे खैर, blessing everyone. Bless, 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 bless. No matter what it is, just bless. That is your real role in life. That is your real position in life. Not choosing, not deciding, ये इसके लिए अच्छा है तो उसको मैं blessing दे देता हूँ, ये इसके लिए नहीं अच्छा है मैं नहीं दूंगा blessing.
उनकी इच्छा है, उनकी लाइफ है। चाहे बच्चे हो या कोई भी हो, just allow them, allow and bless, allow and bless. ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज, मूड मथे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मथे। और गोविंदम भजने का सही मतलब समझिए। भज गोविंदम डज नॉट जस्ट मीन गोविंद का नाम लेके एक जगह में बैठे रहो और भजन गाओ। दैट इज नॉट हाउ वी वर्शिप। वर्शिपिंग, गोविंद को भजना यानी हर पल में, हर क्षण में गोविंद का रूप दिखाई दे, आपके हर वाक्य में, आपके हर चाल में, आपके हर परिस्थिति में, हर अवस्था में। Bringing that to this, when you bring that quality of that to this, that is the true prayer, that is the real worship, that is the real meditation. So that is the challenge, that is the opportunity in everything you do, in your work. Let your work become a prayer. Let your life become a prayer. Let your words become a prayer. This is the kind of world we want to create together. Bringing that to this, bringing that to every moment, bringing consciousness, awareness to this. That is the true meaning of Bhaj Govindam.
live the true meaning of these words. गंध कोशी सांग तू है इसका ध्यान भाषा Just find me the lyrics, somebody. Post it. ध्यान भाचा नील रंगे सांग तू आहे इसका ना 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 रा 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 रा। चलो जल्दी, चैट में किसी ने पोस्ट किया कि नहीं अभी तक? त्या फुलांच्या गंध कोशी। Lot of you know Marathi, I think, today, and some of you may not know Marathi, but see if you can understand, follow along. Root is all Sanskrit anyway, which is the root of Hindi. तो समझ में तो ज़्यादातर आ ही जाएगा। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट क्या हो गया भाई राजेश? भेटला की नाही? तो त्या फुलांच्या, फूल यानी फूल, जो फूल होते हैं, जो फूल के गंध कोशी, सांग यानी बोलो, सांग तू आहेस, आहे मीन्स है, वो फूलों की जो खुशबू है, तू ही है क्या? ता प्रकाशी तारकांच्या, तारक यानी जो तारे होते हैं, जो प्रकाशी, जो प्रकाश तो पता है, ओतीसी तू तेज का, तेज भी पता है, तो तेज का जो मेन शब्द आप हिंदी में पकड़ लीजिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। जो छोटे ग्रामर है वो उसको भूल जाइए। प्रकाश, तेज, नभ, नभ तो मालूम है, नभ यानी आसमान, नील रंगी, ये सब मालूम है आपको। आप भूल जाइए कि आपको मराठी नहीं आती है, बस ये हिंदी में सुन लीजिए आप। मैं गाता हूं मराठी में, आप हिंदी में सुनिए। और जिनको मराठी आता है वो तो ठीक ही है। त्या फुलांच्या गंध कोशी सांग तू आहेस का? त्या प्रकाशी तारकांच्या ओतीसी तू तेज का? त्या नभाच्या नीळ रंगी होनिया गीत का? गात वायूच्या स्वराने सांग तू आहेस का? त्या फुलांच्या गंध कोशी मानवांच्या अंतरीच्या
प्राण तू आहेस का हा वादळांच्या सागराचे घोरते तू रूप का जीवनी वर्षणारा तू कृपाचा मेघ का आसमंती नाचणारी तू विजेची रेघ का त्या फुलांच्या गंध कोशी जीवनी संजीवनी तू माऊलीचे दूध का जीवनी संजीवनी तू माऊलीचे दूध का कष्टणाऱ्या बांधवांच्या रंगसी नेत्रात का मूर्त तू मानव्यकारे बालकांचे हास्य का या इथेने त्या तिथेने सांग तू आहेस का त्या फुलांच्या गंध कोशी. Thank you. Thank you. And even though it's asked as a question, tu ahes ka, is that you? Is that you? But you and I know that we are inside the mind of God. We are inside the mind of God. And anything you see inside the dream of God is only the dream of God, and therefore is only God. And even though this poet is asking it as a question, what he means is, yes, you are. Yes, you are. Tya Pulancha, are you that fragrance in the flowers? Are you the light in the stars? Are you the laughter in the laughter of children? Are you the sweat on the brow of the laborer? Are you that cloud burst of mercy that showers on life? Wow. Wonderful. So good. You heard it in Hindi, no? हिंदी में सुनाई दिया. बिल्कुल. And even if you didn't know Hindi, Jeevani Sanjeevani. What was that? What is the line? Jeevani Sanjeevani tu माऊलीचे Mauliche. दूध का, Ah, माऊलीचे exact. दूध का. Right. Jeevani Sanjeevani, which is the life-giving Sanjeevani. Mauli yani mother. So are you that life? Are you in that life-giving milk of the mother? in everything, in all of it. And the challenge for all of us is to see this in everything, everything. This is poetry and this is a song, so it only lists a lot of beautiful things. You know, the stars and the light and the laughter of the children. But see it in so-called ugliness. See it in so-called sorrow. See it in pain, see it in suffering. It is all that only, it is not different.
Our mind only divides good, bad, good, bad, good, bad. And we are willing to see the divine in the good. But we are not willing to see the divine in so called bad because it is not bad anyway. First of all, it is only your mind that has divided this good, bad. Everything is just what it is. It's just what it is. And when we can see that, then we can simply love everything, enjoy everything, see that in this, no matter what this is. No matter what this is, see that in this. That's your challenge. As part of this community of Open Door, this is your challenge. It is not possible for people who don't have this understanding to see this, to see that in all things. But if this is the dream of God, anything you see in this dream is God. Anything, everything is only part of the dream of God. It's so easy. And when you look closely at everything, anything, you will find the seed of love, you will find the seed of truth. Take the worst thing that you can think of, which causes disgust. Take one example. Say, take a sewer, a gutter. Gutter. Take a gutter. I mean, the mind immediately divides it into the worst possible thing, the ugliest. Oh my God. But do you have the strength, the eyes, to see the divinity in that? It is teeming with bacteria. It is teeming with bacteria. That sewage is from what fertilizer gets made. And that fertilizer goes into the ground and comes out as a flower. Now when it becomes a flower, yes, divine. Very good, very good. But that flower was the sewer. It was just in another form. The gutter was the seeds of the flower. So we do not have to divide the world anymore. It is all part of the divine dream. If you look close enough, you will find it. In the flowers and the trees and the sunset and the clouds, it's easy. Learn how to see it in anger. Learn how to see it in hatred. Learn how to see it in pain, in suffering, in grief, in sorrow, in struggle, in challenge, in difficulties. If you can see divine in difficulties, लाइफ बन जाएगी यार. लाइफ बन जाएगी. तो लाइफ बनाओ. लाइफ बनाओ. Life banao. Let every moment, every day be full of this wonder, full of this magic. Not just the chosen few moments here and there, which we snatch from, which we are always clamoring for and always craving. Every moment, celebration. Every moment, celebration. Wow, wow, wow. An inner wow. बाहर से वाव 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 करेंगे तो लॉकअप कर देंगे सबको. But the inner wow of all there is. So I wanted to share about tennis, but time ho raha hai. Next time, Saturday, we'll talk about tennis and how I saw that in this which is called tennis. Time भी वही बोला. And then you tell us. Sorry. We can stop the recording and then you tell us about that. टेनिस वाला. नहीं मुझे फिर वो Wonderful. Thank you, thank you, thank you. Hari Om Tat Sat. I bow down to the divine that is sitting where you are sitting. I bow down to the divine in you. I bow down to the divine that is present everywhere, all around me, in me, outside me, and everywhere. Thank you, thank you, thank you.
हरिओम तत्सत।